हेलो दोस्तों, और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो से आपको काफी हेल्प हो रही है। और आज फिर से मैं एक और नए टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं। ये टॉपिक डेफिनेटली थोड़ा सा सेंसिटिव है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सब इसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, और वो है हाउ टू ओवरकम द ग्रीफ एंड लॉस। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि हम सब डेफिनेटली इसे लाइफ में एक्सपीरियंस तो करते हैं। कोई अर्ली एज में कर लेता है, कोई बाद में। बट लाइफ जो है, हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे ही इंसिडेंट से, जो जर्नी है ऐसे ही इंसिडेंट से होती है। पर क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं, तो ये जो लॉस है या ग्रीफ है, ये भी हम सब अपने अपने तरीके से ही इसे एक्सपीरियंस करते हैं। और हो सकता है आप भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रहे हो जहां किसी का लॉस, वो फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई क्लोज्ड नियर एंड डियर वन हो सकता है, या लाइफ में कोई और लॉस से आप गुजर रहे हो जिससे आपके अंदर वो ग्रीफ की भी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं? कैसे हम अपने इस इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें? इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स आपको मदद भी करेंगे। और मैं बता दूं कि मैं भी अर्ली एज में ही इस लॉस को एक्सपीरियंस कर चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं तो नॉट टू वरी। हम सब इसे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, और हम सब रियलिटी भी जानते हैं। और फिर भी क्योंकि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग जुड़े होते हैं दूसरे लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, तो ये लॉस कभी कभी हमारे लिए बहुत ज्यादा आघात कर देता है। तो सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि अगर आप ऐसे किसी लॉस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट द ओनली पर्सन। If you look around you, you will find many people who have experienced that loss, that grief. तो कहने का मतलब ये है, जब हम ये समझ लेते हैं कि यस, मैं अकेला ही नहीं हूं जो इस सदमे को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, दूसरे भी लोग इससे गुजर चुके हैं, तो हमें इससे एक मनोबल मिलता है, हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। ऑफ कोर्स मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक स्ट्रेंथ ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, जो है एक साइंस प्रूवन टेक्निक है माइंडफुलनेस। कैसे माइंडफुलनेस भी हमें इसमें मदद कर सकती है। माइंडफुलनेस मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी समझाया है कि माइंडफुलनेस इज अ प्रैक्टिस ऑफ बीइंग फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट while being aware of our thoughts, our feelings, but in a non judgmental way, in a kind way. तो जब हम माइंडफुलनेस की स्टेट में आकर अपने इस ग्रीफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो डेफिनेटली हमें इसमें काफी मदद मिलती है। इससे बाहर आने में हम काफी अपने आप को सक्षम बना लेते हैं, अपने आप को कैपेबल बना लेते हैं कि इस सदमे से बाहर आ सके। तो दोस्तों, जब भी आपको अंदर उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये एक समझना है कि ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है एज ए ह्यूमन बीइंग।
जब हम इसे एक्नॉलेज करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को उसमें एक एक्सेप्टेंस की स्टेज में आ जाते हैं, तो हम उसके इम्पैक्ट को, ग्रीफ के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जब भी इसे एक्सपीरियंस करें, acknowledge that you are having this experience, accept it that it is in you. You are going through this experience of grief and loss. उसके बाद आप माइंडफुलनेस की स्टेट में होते हैं, तो breathe in to ground yourself in the present moment and breathe out and let it go naturally. And जब आप breathe in करें, then imagine that you are breathing in peace. And when you breathe out, imagine that you are breathing out the tension, the negative emotion you are holding or you are experiencing in your body at the moment. And आप इसके आगे एक और स्टेप भी ले सकते हैं. Start visualizing that when you breathe in and breathe out. So every time you breathe out, you are visualize that grief, that moment of loss as an object. See in your mind as something in a physical form, not the person, but the experience of that emotion, the loss. So visualize it as an object. Notice the color of that object. Notice the size of object. Notice how close or how far it is. And every time when you breathe out, visualize that you are pushing it away with your breath when you breathe out. And it is going away in your mental screen. And as it is moving away and it is becoming small, start noticing the shift in your experience also. You will start experiencing that grief or that emotional challenge you are finding yourself in. That is also going away. So you can repeat this few times and see that the grief as an object maybe completely disappear, or it becomes so small that at least you are out of that loss, that grief. If you find yourself very uncomfortable sitting, maybe you can do the mindful walking. Mindful walking, when you do that mindful walking, notice the sensation in your feet when they touch the ground. How you lift your foot, how you put it forward. And when you put it forward, the touch of your foot to the ground. And notice your breath also, how they are interrelated. So you can do that mindful walking also. It will help you to overcome that. You can do the journaling also. Journaling is also very powerful tool to overcome that challenging emotional baggage we sometimes experience. So you can put down whatever in an honest way you are feeling the grief, and imagine that when you are writing down, you are bringing them out of your body. And as you write down, as you journal, start feeling the shift inside you, feeling the lightness in you. Yes, another strategy you can apply is having a gratitude. Definitely in the time of grief, it becomes very challenging to be grateful. But
we all know that feeling grateful for even the past help us to come out of that grief. But if you find it is too overwhelming, maybe you can be grateful for small things. Maybe you are having a cup of tea, maybe someone there to care for you, maybe whatever you see things around. So be grateful for that also. And as you practice this, I'm sure you will feel so much relief in overcoming this, navigating through this phase of grief and loss. And one more thing you can do is to find a support in this time, whom you trust. It can be your sort of an island in the time of emotional flood. Whoever you trust, a person, your mentor, your relative. So sharing your inner feeling with that person also help you to come out of that. And understand that yes, we all experience pain, but the purpose of this practice or even this video is not to get rid of that memory or the pain, but acknowledging that life is all about navigating through these ups and downs of life. And mindfulness help you to navigate it in a much more composed way, in much more kind way, rather than sabotaging yourself or feeling yourself completely drawn into that emotional state. And as you progress, as you persist in this practice, sooner you will find yourself much more composed, much more stronger, and living a life of purpose. And if you like this video, yes, please don't hesitate to like, subscribe my channel, and share it also with someone who is going through this kind of a phase. And apart from that, if you are looking for a personal help also, you can approach me. And if you don't know how to practice mindfulness, I'm sharing with you the link. I have created a course on mindfulness. Apart from that, yes, if you are experiencing any other kind of a stress, then also I have written a book on stress management, 60 plus strategies for rising above the stress. So you can go for that book also, and you will find both the links, mindfulness practice link and the book link, in the description. And thank you so much for being here, and we will meet you again soon with another topic on maybe in the next video. So thank you so much.